So I think the kind of rapid market is changing and the industry demand is changing. आप लोग एज एन HR अक्सर एक सवाल पूछते हो बच्चों से, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा क्या इंटरव्यू? ये क्वेश्चन सदियों वाला है एंड द इंटेंट बिहाइंड दिस को एक बार समझना इम्पॉर्टेंट है. द इंटेंट इज टू सी इस बंदे की सोच कहाँ तक है. ओके. Nobody is looking to hold you to what you say. अगर आपने कहा कि मैं 5 साल बाद फलाना पोजीशन तक पहुंचना चाहती हूँ, फलाना पैसे तक पहुंचना चाहती हूँ, I want to be creating this kind of wealth, I want to live this kind of family life, I want to have this much status in society. 5 साल बाद आपने अचीव नहीं किया तो कोई आके आपको बोलने वाला है चल झूठे? No. It's about when you are asked that question, what are the variables you are able to think of? Okay. How is it that you envision the next few things? Do you have a certain commitment to the path that you're taking and things like that? Wow. I think that's a wonderful example again. So what if I ask you, this is in HR, which all are the questions one HR should ask during interviews, and what you personally recommend to the HR, I mean HR leaders who's taking interview on a daily basis, they should not ask few questions. So the list of asking the question and not asking the questions. I know it's very complicated question, but I would love to hear it from you. Oh well, the number one tip for HR people who are doing interviews is make your candidate feel comfortable. Okay. अगर आपका कैंडिडेट उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं और फिर आप उनको इवैल्यूएट करते हो, इट्स अ विन विन फॉर द कैंडिडेट एंड फॉर द एम्प्लॉयर. ये स्ट्रेस इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ दैट, unless it is one specific round for a certain kind of job that requires an immediate, ER में नौकरी करनी है इसीलिए आपको स्ट्रेस इंटरव्यू लेना है to see how this person performs in a stress interview, तो वो बात और है. But that's not 80, 90, 95, maybe even 99% of the jobs. The bulk of our jobs require people to be team players, and therefore listen more. That will tell you more about the candidate than asking all these crazy funny questions. जितना आप candidate को बात करने देंगे and you navigate that conversation to what is it that you are looking for in terms of cash, knowledge, attitude, skills, habits, उतना win-win रहता है for candidate also from an experience perspective, and for the employer in finding that hero that you're looking for. Wow, very nice. And similarly, generally after the interview, HRs used to ask, or the hiring manager used to ask to the students, do you have any question? 90% of students do not have any questions. What questions of list you suggest to those students कि उनको ये पूछना ही चाहिए? Number 1, please look at Google, ChatGPT, your favorite source, and put this question, go prepared mentally with a list of 3 to 5 go-to questions. ये वो मौका है आपको जांचने के लिए कि ये कंपनी आपके लिए सही है क्या. Unless you're looking at the first job to be just a stepping stone, you probably want to look at it a little more closely. Now, especially if your employer is not a world-renowned brand, if it's a smallish company, if they're giving you a role that you're really interested in, then you need to ask questions around things that are important to you. So, ChatGPT में बिल्कुल डालिए at the end of the interview, what are questions that I can ask? Typically answers क्या आएंगे ये भी बता देती हूँ. Answers आएंगे a little bit about the culture of the organization, about how fast have some recent, what kind of career paths have some recent people who've been hired in this role taken in the organization. इस तरीके के questions जो है ये आपके काम के हैं. And they also let the company know that you're curious enough about the company to know a bit more about them.
दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डिस्प्ले लिटिल बिट ऑफ योर नॉलेज, है ना. तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा ऐड करके फिर अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे तो कंपनी को भी इंटरेस्ट आता है. बट इसको फिर आप लंबा स्पीच एंड देन अ क्वेश्चन मत करिएगा. Because at the end of an interview everybody is tired and they probably want to look at the next candidate. So keep it succinct, brief, and at the same time clear. Wow. आज भी इंडिया में ना स्टोरीज बिकता है, राइट, एंड फ्रॉम बोथ साइड्स. सो द एम्प्लॉयर मस्ट हैव सम स्टोरीज, द जॉब सीकर हु इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, उसके पास भी कुछ ना कुछ स्टोरी तो होती है, राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज यू सजेस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कि उनको इंटरव्यू के टाइम पे शेयर करना चाहिए? स्टोरीज का एक फॉर्मेट है इन एन इंटरव्यू. पहली बात तो ऐसा एक हुक स्टेटमेंट के साथ ओपन करिए जिससे कि ये पता चले कि आप ये स्टोरी बोल क्यों रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ देर पहले मुझे पूछा that you worked with the government of Maharashtra and what was your experience about employability and things like that. And I started with what's really the purpose of skill development. So result पहले बताना बहुत important है in a way that grabs attention so that they want to hear the rest of your story. आप देखिए, अभी आप Instagram या YouTube Shorts या जहाँ पे भी आप देखते हो, when you're scrolling, unless it's a nice catchy headline, do you bother to watch even a 1-minute video? No, right? That's the same thing with everybody. जैसा आप खुद behave करते हो वैसे सामने वाला सोचता है. So start with a strong opening statement that has some result in it which whets the curiosity of the interviewer to ताकि उनको जानने की उत्सुकता हो कि आपने ये कैसे किया. Then give context. That's the second step. So first result, then context. Then context gives, okay, मैंने ये अचीव किया, बैकग्राउंड क्या था, भूमिका क्या थी, ऐसा ऐसा हुआ, इसके लिए ये प्रॉब्लम था, इन लोगों को तकलीफ हुई, मैं इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था या चाहती थी, इसलिए मैंने ये एक्शन लिया, विच इज़ द थर्ड वन. जब आप एक्शन के बारे में बोलते हो तो पता चलता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन था कहानी में. हो सकता है कि ये टीम वर्क हो. फॉर एग्जांपल, आपने ट्री प्लांटेशन का ड्राइव किया हो, है ना. बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज में इस तरीके के इनिशिएटिव्स, बट उसमें आपका स्पेसिफिक रोल क्या था. इंटरव्यू इज नॉट हायरिंग ऑल दोस 25 स्टूडेंट्स हु वर part of the organizing team. The interviewers, you are sitting in front of the interviewers, so you need to highlight what were actions you did. तो ये हुआ एक्शन. एंड फाइनली, सबको पहले बोली हुई बात भूल जाते हैं, आपको रिजल्ट वापस से याद दिलाना है कि start with the result, go to context, go to action, end again with the result on this is how you brought this kind of impact. So when I say result, it's about आपने जो भी किया उसके वजह से फ़ायदा क्या हुआ. That's essentially what we are looking for when we are saying result. Wow, so interesting, and as well as you have beautifully explained the entire story context which students should bring out in their interviews. ऐसी कौन सी advice है which is, I would say, the 100% का advice which you would like to give to the audience, जो उनको जॉब मार्केट में हेल्प करेगा?